अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हमें डॉक्टर सैयद अफरा फ्रॉम फाउंडेशन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंटिन्यू है और अब हम एसेसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले लिवर को पढ़ रहे हैं। लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है और एज ए ग्लैंड ये जो सिक्रेशन बनाता है जिसे हम बाइल कहते हैं। और बाइल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी जो फैट होती है, जो हम खाने में चिकनाई लेते हैं, उसको हज़म करने में, उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लिवर एनाटॉमिकली अगर हम देखें, द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन वेज शेप ऑर्गन विद टू lobes ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप. A human liver normally weighs approximately 1.5 kg and has width of about 15 centimeter or 6 inch. There is also considerable size variation between individuals, with the standard differing for men being 970 to 1860 gram, and for women 600 to 1770 gram. It is both the heaviest internal organ and the largest gland of the human body. Located in the right upper quadrant of the abdominal cavity, it rests just below the diaphragm, to the right of the stomach and the ovaries, the gallbladder. The liver is connected to two large blood vessels, the hepatic artery and portal vein, and common hepatic duct. The hepatic artery carries oxygen-rich blood from the aorta via celiac plexus, whereas the portal vein carries blood-rich digested nutrients from the entire gastrointestinal tract and also from the spleen and pancreas. These blood vessels subdivided into small capillaries known as liver sinusoids, which then lead to lobules. ग्रॉस एनाटॉमी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसके लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं। लिवर जो है वो मतलब जो फर्स्ट डायग्राम है वो राइट एंड लेफ़्ट लोब को शो कर रही है, और जो लोअर डायग्राम है वो इसके जो बैक साइड पर 4 लोब्स हैं उनको शो कर रही है। ग्रॉसली इसको डिवाइड किया गया है मेनली 2 लोब्स में, जो कि फर्स्ट आपने देखी राइट एंड लेफ़्ट लोब, and 4 parts when viewed from below. The falciform ligaments divide the liver into left and right lobe. मतलब जो आपने फर्स्ट पिक्चर देखी उसमें राइट एंड लेफ़्ट लोब जो बना हुआ है वो डिवाइड हो रहा है falciform ligaments के ज़रिए. From below, the 2 additional lobes are located between the right and left lobes, one in front of the other. A line can be imagined running from the left of the vena cava and all the way forward to divide the liver and gallbladder into 2 halves. These lines are called Cantley's line. Other anatomical landmarks include the ligamentum venosum and the round ligament of the liver, ligamentum teres, which further divide in the left side of the liver in 2 sections. सरफेस की बात हम करेंगे तो ऑन द डायफ्रामिक सरफेस, अपार्ट फ्रॉम द ट्रायंगुलर bare areas where it connects to the diaphragm, the liver is covered by a thin double layered membrane, the peritoneum layer, that helps the reduce friction against other organs. The surface covers the convex strip of the 2 lobes where accommodate the shape of the diaphragm. The peritoneum folds back on itself to form the falciform ligament and the right and left triangular ligament. These peritoneal ligaments are not related to the anatomic ligaments in joints, and in the right and left triangular ligaments have no non-functional importance, that though they serve as surface landmarks. The falciform ligaments function as to attach the liver to the posterior portion of the interior body wall. The visceral surface or inferior surface is uneven and concave. It is covered in peritoneum apart from where it attached.
the gallbladder and the portal appendix. The visual surface of inferior surface uneven and concave. Several impressions on the surface of the liver accommodate the various adjacent structure and organ. Underneath the right lobe and the right of the gallbladder fossa are two impressions on behind the other end separated by a ridge. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अगर हम देखते हैं लिवर की तो हमें इसके अंदर लोब्स अगर हम देख रहे हैं तो जिन्हें हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं, दे लोब्यूल्स आर रफली hexagonal and consist of plates of hepatocytes radiating from central vein. The central vein joins the hepatic vein to carry blood out from a liver. A distinctive component of a lobule is the portal thread, which can be found running along each of the lobule corner. सेकेंडली हमें अगर इसे हिस्टोलॉजिकली देखें तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी को देख रहे हैं तो इसमें दो टाइप के सेल हैं, पैरेन्काइमल सेल्स हैं एक एंड एक नॉन पैरेन्काइमल सेल्स हैं. About 70 to 85% of the liver volume is occupied by a parenchymal hepatocytes. मतलब लिवर के अंदर 70 to 85% होते हैं वो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं और नॉन पैरेन्काइमल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिवर सेल्स बट ओनली 6.5% ऑफ इट्स वॉल्यूम. द लिवर साइनोसाइड आर लाइन्ड विथ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, sinusoidal epithelial cells and phagocytic cup cells. Hepatic stellate cells are non-parenchymal cells found in the perisinusoidal space between a sinusoid and a hepatocyte. Additionally, intrahepatic lymphocytes are often present in the sinusoid lumen. डियर फ्रेंड्स, लिवर एनाटॉमिकली हमने देखा इसमें कितने लोब्स हैं, कितने टाइप के सेल्स हैं और कितनी सरफेस इसके अंदर हैं, कितना वेट है इसका और इसकी लोकेशन क्या है. ये आपने टोटल लिवर की एनाटॉमी को स्टडी कर लिया है. इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सेसरी ऑर्गन को